Hello guys, welcome to the Glow Together. Alright, if you are new on this channel, then let me tell you that on this channel we talk about simple skincare routine, simple skin remedies, home remedies I do share, and hair care, hair mask, hair remedies, hair oils and whatnot. Like there are a lot of stuffs that we do I do share on this channel. So what I'm saying that today, in India, it's really like people are mad for whitening their skin, right? They do use a lot of creams, lotions, skin whitening capsules, injections and whatnot. And let me tell you guys, you can achieve that, but not like 5 to 4 shades different from your skin, but definitely 1 to 2 shades you can use, and you can lighten your skin at home only using these minimal and these simple home ingredients. Okay, so for that I made a cream at home. Let me show you. The cream is this. Okay, and guys, this cream is gonna wonder you because it's going to whiten your skin at least 2 shades. Okay, and because it's a daytime and I'm going to use it in front of you, but you have to use it at night, not in a day. Okay, so you have to take this much. Okay, this much as I took. It looks like this. All right, and just rub and just apply on your face. And I'm telling you guys, like, you will be amazed by the result, because I did use it and I could see the difference, and that's the only reason I'm sharing the video with you. All right, so without delaying, let's just move to the video and see the. So for the cream guys, we need these are the ingredients. हमें जो चाहिए 2 vitamin E के कैप्सूल, केसर, right, and aloe vera gel, 1 bowl to mix everything, and rose water and almond oil. और एक मैंने खाली छोटी सी कंटेनर भी ले लिया है, थोड़ा छोटा सा, केसर का ही है. तो सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पे अराउंड हाफ स्पून ऑफ एलोवेरा जेल. एलोवेरा जेल गाइस स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, एंड इट्स रियली गुड फॉर रिंकल्स एज वेल. ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे केसर. तो केसर अब हमें लेना है 3 से 4 स्ट्रेंथ्स, दैट इज़ इनफ. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 डाली है और 3-4 और आ गई. तो गाइस केसर का जो मतलब पता करने का तरीका है कि ये रियल है या नहीं. तो जो केसर नकली होता है, जो प्योर नहीं होता, वो अचानक से एकदम से कलर दे देता है, बट जो रियल केसर होता है वो ऐसा नहीं होता. तो ये जो है ये एकदम से कलर नहीं दे रहा है. ठीक है, तो अब मैं इसमें डालूँगी अराउंड 1 स्पून ऑफ आलमंड ऑयल. Almond oil guys, it's really good for skin. It nourishes our skin. It has vitamin E in it, and also it really provides a natural glow to our skin. And to be honest, kesar is the whitening treatment here, whitening ingredient. I'm so sorry. तो केसर जो है वो स्किन को लाइटन करता है. दैट्स द रीज़न वी हैव यूज्ड इट. एंड हमें डालनी है लाइक अराउंड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ रोज वाटर. दैट्स इनफ. अब हमें करना है इसको मिक्स. सबसे पहले मिक्स करने से पहले विटामिन ई के कैप्सूल और डाल लेते हैं. 2 डाले हैं मैंने. ठीक है, ये मैंने इसमें डाल लिए. अब हम करेंगे इसको अच्छी तरह मिक्स. और मिक्स करने के बाद गाइस ये लग रही थी कुछ इस तरीके से. इजंट इट प्रिटी? और गाइस ये जो हमारे आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट देने वाली है वो तो आपने देख ही लिया है. एंड
just use it and let me know. So this is how to make the simple skin whitening cream at home. I hope you like this video, and if you like it, then don't forget to share, like and comment and subscribe my channel. And on this channel we learn, we grow and we glow together. All right, so I'll meet you in my next video. Till the time, take care. Bye bye.